मुंबई में फिल्म तू या मैं के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में शनाया कपूर, आदर्श गौरव, डायरेक्टर बिजॉय नाम्बियार और प्रोड्यूसर आनंद एल राय ग्लैमर और एक्साइटमेंट के साथ नजर आए। ये फिल्म एक हाई कॉन्सेप्ट सर्वाइवल थ्रिलर है जिसमें शनाया और आदर्श एक कोलैबोरेशन के लिए निकलते हैं, लेकिन एडवेंचर एक जानलेवा मौसम में बदल जाता है। ट्रेलर के विजुअल्स में दिख रहा है कि दोनों इन्फ्लुएंसर्स एक अबैंडन्ड पूल या बैकवाटर्स में एक क्रोकोडाइल से बचने की कोशिश करते हैं, एक सस्पेंस और डेंजर भरी कहानी का प्रॉमिस करते हुए। तू या मैं का टीजर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां रोमांस और सर्वाइवल थ्रिल का मिक्स ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहा है और फैंस के बीच फिल्म का बस बढ़ रहा है। शनाया कपूर, जो पहले आंखों की गुस्ताखियां में नजर आई थीं, इस फिल्म में अपने लीड रोल के साथ एक ड्रामेटिक और एडवेंचरस अवतार दिखाती नजर आती हैं। आदर्श गौरव भी अपनी स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस के साथ स्टोरी को इमोशनली और थ्रिलिंगली आगे ले जाते दिखाई देते हैं। डायरेक्टर बिजॉय नाम्बियार और प्रोड्यूसर आनंद एल राय ने कहा कि तू या मैं एक अलग तरह का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, जिसमें रोमांस, थ्रिल्स और सर्वाइवल एज का ब्लेंड है, और फिल्म 13-14 फरवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी। सबसे पहले तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर कमिंग अप इन सच लार्ज नंबर्स एंड शोइंग सो मच सपोर्ट फॉर आवर ट्रेलर गाइस। रियली बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू ऑल। थैंक यू। मेरी एक्चुअली भाई परवरिश थोड़ी खतरनाक हुई है। खतरनाक? हाँ, तो ऐसे बहुत अलग अलग एरिया में रहा हूँ मैं और बहुत अलग अलग जनता के साथ मैंने बड़ा हुआ हूँ मैं। लेकिन आई हैव टू गिव अ शाउट आउट टू शांतनु पुजारी भाई। शांतनु पुजारी लेजेंड आदमी है, वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ हिप हॉप इन मुंबई, एंड ही मेड मी मीट सात बंटाइज, ही मेड मी मीट शेक्सपियर, ग्रेविटी, वेंट टू गोवंडी, मेट विजय दादा, यू नो ऑल दीज जो दिग्गज है ना हिप हॉप के, उन सब से मैं मिला। तो उन सब से मिल के आई गॉट टू लर्न अ लॉट अबाउट देयर हम्बल बिगिनिंग्स एंड यू नो द रीजन व्हाई दे गॉट इनटू हिप हॉप। सो आई फील लाइक मेरे को बहुत हेल्प हुआ इस जर्नी से। लायरा पूछ रही थी if we're both dating or just like hooking up. तो तूने क्या बोला? मैंने कहा तू येड़ी होगी क्या बच्ची? तू येड़ी होगी क्या बच्ची? I actually want to start by first also just saying thank you to everyone for coming. And of course this journey it started off actually with Mukesh sir, Mukesh Thabra. उन्होंने मुझे 2 scenes भेजे, सिर्फ 2, स्क्रिप्ट नहीं था, बस 2 scenes थे, and I read the 2 scenes and I was like, sir, I have to come and audition for this, will you please help me out and record this for me? And he said, this is for Anand sir, that's all I knew. And I was like, okay dude, we have to kill it now. You know, I have to give my best. And मैं वहाँ गई, हमने 2 scenes वो record किए, and we sent it to Anand sir. And after I met Anand sir, he had this belief in me and he saw this potential in me, which I'm forever grateful for. And he stood by me through everything. So I'm here because of that. And of course, when I read the script, then मुझे लगा कि सब कुछ है इसमें, मतलब there is love, there is horror, there is thriller, there is dance, there is comedy, there is what is missing, right? What is missing? I mean, what a mixed genre of love and horror and thriller. Like, that's crazy. I mean, I know we've seen horror comedy, we've seen the rom-coms, but I don't think anyone's seen romance in a survival thriller, guys. Like, what? So there was no ways I was... I think there were multiple reasons why I was really attracted to the screenplay. Number one being that Bijoy and Anand sir were coming together to make this film, which in itself is a very unlike combination because they have very unique styles of their own. So when I read the script that was written by Abhishek, it was so brilliant and you know, I just instantly responded to it. Also creature features हमने बनाई नहीं है इंडिया में ज़्यादा, तो मेरे को था कि मज़ा आएगा. You know, it's a genre film and we'll have a lot of fun filming it. So that was it was amazing. I think Shanaya के साथ काम करते time I realized that she has such a childlike innocence about her. And also she's very easily happy and pleased in life. You know, it doesn't take much for anybody to make her laugh. तो ऐसे अपने को लगता है कि अपन बहुत funny है, पर actually ये हंसती बहुत आसानी से. तो बहुत मजा आया शनाया के साथ काम करते हुए. Well, it's quite a volatile market that way, and I don't think anyone can predict what will really work.
कभी लगता है सिर्फ हॉरर कॉमेडीज वर्क करेंगे, then something like a Sayara comes, you know. So I think the audience's tastes are also changing, and we are, as filmmakers and artists, we also have to keep up and try and present something new, and that's what we were trying to do with this film also. Like Shania rightly said, the mix of genres. Of it being a survival thriller, yet it's also a rom-com. So I'm hoping that that newness that we are trying to do with it. Before I say what really appealed to me, I would like to actually call 2-3 people on stage. So of course it was Anand sir's first call to me that made me come to the project and listen to the project. But I should give credit to the one person who gave such a phenomenal narration. And Anand sir was so smart. He didn't tell me anything about the film before I came for the meeting. He said, "Tu aake sun le bas." So, and I think he had his ace up his sleeve, and that ace is Abhishek Bandekar. Please come on stage. And our story writer, our second ace, Mr. Himanshu Sharma, is missing here. We really miss you. He's been a solid creative support throughout the project. And the other two people I want to call is Parul and Ansh. Please. Of course, the film is a collaborative team effort. It's not possible to realize your vision until and unless you have all the people backing you up. So my entire team, and a lot of them are here. Without them, this wouldn't have been possible. I wish I could just name each and every one, and this feels like an award show, and I'm thanking people. It's not that, but I just want to say that a film is really a collection of all these people coming together and helping you realize your vision. So, as much as they say it's a captain of the ship and all that, I don't buy that concept at all. I really think a film is impossible without every member of the team coming together and helping you elevate your idea. And the idea started with Anand sir and Himanshu, and beautifully written by Abhishek, the screenplay, and the way he narrated. I want him to narrate all my films from now on. Trust me. He can hold a podcast here and just narrate the film, and it will be equally thrilling without anything. And you will be sold to it. And that's how phenomenal he is in his narration and in the writing. So that line, "Edio ke bachchi," that's him. Whoa! And you should, I remember we were like conceptualizing that scene, and I think within a minute he came up with that line, and I knew that that's it. You know, so he's that quick, and that he was so connected to the script and that way. But yeah, so once again, without digressing, I just want to thank all these people who made this possible. Ansh and Parul who play other characters, so it's almost like a mirror image that you see. So Parul and Shania are part team one side, and Adarsh and Ansh are on one side, but you'll see how that merge happens in the film and how they just kind of completely mix. And I'm hoping that the audience enjoys that ride. Yeah. मेरे को इस फिल्म में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो लग रही थी जब हिमांशु ने कहानी सुनाई और अभिषेक ने नरेट की वॉज और वो कास्टिंग थी मेरे लिए, एक जिसको कहते हैं ना इनिशियल कास्टिंग, जिसके बिना मैं ये फिल्म फ्लोर पे नहीं लेके जा सकता, वो था बिजॉय नाम्बियार. एंड आई न्यू वेरी वेल दैट एक बार वो आएगा ऑफिस और सुनेगा तो चांसेस कम है कि वो बिना स्क्रिप्ट के बाहर जाएगा. सो आई वॉज वेरी हैप्पी टू हैव हिम ऑन बोर्ड, एंड देन जब वो आ गया आई वॉज श्योर कि ये फिल्म वैसी दिखेगी जैसी दिखनी चाहिए. सो जब आनंद सर ने मेरे को, आनंद जी, मैं बड़े भाई बोलता हूँ उनको हमेशा, तो जब बात हुई कि यार थोड़ी महंगी पिक्चर है, पहला ये था, क्योंकि इससे काम करवाना है ना, लोग आराम से समझ जाते हैं. पहले वैन बिजॉय का नाम आया, एंड देन वी वर्कड बिजॉय की सारी पिक्चरें एज अ डायरेक्टर जब उसने की तो मार्केटिंग मैंने की, एक कॉन्फिडेंस और आ जाता है. एंड मैं खुश इसलिए हूँ अभी और कि इतनी ही तादाद में लोग अगर थिएटर में जाएंगे तब जाके मज़ा आएगा. एंड अभिषेक ने जब नरेशन किया, करेक्ट बोला बिजॉय, हम लोग को तो पूरी पिक्चर दिखा दी इसने. एंड यू गाइज आर टू गुड. मज़ा आ गया. सो ट्रेलर में मज़ा आया. आई होप दैट फिल्म में भी इतना ही मज़ा आएगा. आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं प्लीज़ एंजॉय करिएगा, और फ्राइडे 13th को ज़रूर It's a ज़रूर film जाइएगा made थिएटर में. for the theater experience, so you should come and experience it in. You know, I mean, Bijoy actually has me speechless. But seriously, I mean, हमने जब ये शुरू भी की थी, in the announcement teaser भी हमने कहा था कि सिर्फ content बोलेगा ना तू या मैं. तो collaborative effort से everyone, I mean, every step of this film has been a collab. You know, it's like Color Yellow and Bijoy Nambiar, Color Yellow and BSL. It's Adarsh and Shania. The first song, Rai, Harry and Saath Bantai.
एंड अब हमने बनाई है, वी हैव सर्वाइव द बूट कैम्प दैट वाज द शूट एंड द ऑडियंस अब है, मतलब हम आपको कोलैब रिक्वेस्ट दे रहे हैं, लाइक एंड शेयर इट एंड प्लीज कम एंड सी आवर फिल्म एंड लव इट. As a creator who's also an actor, as an actor who's also a creator, this is the best collab I could have ever gotten. I mean, look at us. And I can say the same for Ansh. He is also a creator. So, I mean, this is such a theatrical experience, this movie, and just to be a part of it, I'm just pinching myself. I mean, just bite me a little, Guddu, please. This is awesome. I mean, this is so cool. I'm very happy. I'm really, really happy. Thank you so much to everyone for considering me for this part, because you have no idea how much it means to me. क्या बोलती है पब्लिक? अरे रे रे मजा आएगी तुम लोग को. अरे गुड्डू भाई रुको ना, मेरे को बोलने दो यार, 2 मिनट रुको ना यार. क्या तुम क्या मगज मारी, 2 मिनट रुको यार. पब्लिक मैं क्या बोल रहा हूँ, 13 फरवरी को सब लोग, जिन लोग की गर्लफ्रेंड है, जिन लोग की नहीं है, तो एक काम करो, जिन लोग सिंगल लोग मेरा नंबर ले लो, मेरा नंबर लिखो 9820. तुम्हारा भाई है इधर का हीरो. क्या बोल रही पब्लिक, जाइए नहीं पिक्चर देखने. जोक्स अपार्ट गाइस, मेरे को बहुत अच्छा लगा. ये मेरी लाइफ की फर्स्ट मूवी है. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन, मेरे को चांस देने के लिए, मेरे को प्रूव करने के लिए. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं रील्स बना रहा हूँ. रास्ते पे रील्स बना के मैं कभी थिएटर में आऊँगा, मैंने कभी सोचा नहीं था गाइस. तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत मिक्स्ड इमोशन है. मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ यार. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन. आप लोग ने मेरे पे इतना बिलीव किया और बस यार थैंक यू. बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं आज. यही रोना दूँ मैं. थैंक यू गाइस, थैंक यू so much. I think that the reason I choose to do any project is purely because of the love for the story and the script. There are multiple things, and this project had more than enough reasons. And it was when I saw Bijoy's name and Anand sir's name, and when I also was one of them who heard Abhishek's fantastic narration, and I realized it's going to be a creature feature, something that hadn't been attempted so far, especially in Hindi films, for a long time. I thought it'll be a great experience. It's just it's the novelty factor as well that I'm constantly looking for. I feel like I'm a human who needs a lot of stimulation, and when I do things that make me a little uncomfortable, I feel more stimulated. Uncomfortable in the sense out of something that I haven't done before, unfamiliar rather, not uncomfortable. Yeah. My first meeting with Vinod sir was for another film, and we were discussing the film, and suddenly we realized we both are from the same place. We both are from Chembur, so we started discussing Chembur, and so we realized we both are from the same hood. So there was a brotherhood that kind of got linked right there, and I'm happy that that he came on board this project. And I didn't know this when I was signing up with Anand sir. I didn't know he was going to be part of it. So it was a very I was quite surprised and quite pleasantly surprised that he's going to be part of this project with us. And I'm really happy that my first film with Color Yellow is also with Vinod Bhanushali Productions. So thank you so much. Same here. But the collab is with Anand Bhai. And regarding the date is something Anand sir and me, we both we know that this is a date fright film, and what better date than Friday the 13th? And that's something we said it's almost like God sent to us. We cannot let go of an opportunity like that. Yeah. So yeah. It is a challenge, this character, Miss Vanity. And I'm really happy that we didn't play this, and Abhishek didn't write this influencer as a stereotypical influencer. I feel like we have these preconceived notions of how influencers should be, and I'm really happy we didn't even go in that route of playing it like that. She's a very real girl who gets stuck in a very horrible situation. I would want to thank Atul Mungia. Atul sir really guided me in this. He helped us. He made me learn a lot of new techniques. So did Adarsh. We did a lot of animal work, which was something that was new to me, which was finding an animal that you feel your character is and represents. And that really helped me stay in the character throughout.
And I would like to, of course, thank my director, Bijoy sir, because I think that he, after all the films that I shot, this is my second that's coming out, but I'd shot a couple before, this was the first time on set where I felt liberated to come up and say my ideas as well. I felt like I could talk to Bijoy sir and say, this is how I'm feeling about the scene. Do you feel like we can work this out? And he was like, whatever you feel your character will do, because you know her the best. If you feel she's not going to sit and say this, then don't. If you're not feeling it, don't. If you want to say this line like this, there's no fixed rule. It's what you feel. And I think that's what helped me a lot to bring this character to life. So. जुरासिक पार्क के आगे सोचना मुश्किल है. You know, it's like such a nostalgia भी उससे बहुत associated है, क्योंकि पहली बार डायनासोर्स के को स्क्रीन पे देखना, वो भी थिएटर पे. तो I feel like for me it's the first Jurassic Park. Yeah, for me it's this movie called Crawl, which is with two alligators. And this is something my younger brother, when he heard that I was doing this film, he's gone crazy. There's crocodile toys and movies all around the house. So that was one of the films that he told me to watch. So I really loved that. कई बार ये होता है कि एज ए डायरेक्टर आपको पता होता है कि आप क्या कर सकते हैं और कहाँ तक की रिस्क या एडवेंचर ट्रिप पे जा सकते हैं, पर एज मेकर, एज अ प्रोड्यूसर आपको लगता है कि जो सपना आपका डायरेक्टर, आपके अंदर का डायरेक्टर पूरा नहीं कर पा रहा, वो दूसरे डायरेक्टर के साथ पूरा कर लें. सो ये वो कहानी थी जो मैं देखना चाह रहा था और मेरे को पता था ये बिजॉय बहुत अच्छी बनाएंगे. सो दीज आर द स्टोरीज जब मैं प्रोड्यूस कर रहा होता हूँ. सो मेरे मन में यही होता है कि ये अगर मैं नहीं बना पा रहा तो एटलीस्ट इसके साथ जोड़ा रहूँ, कुछ सीख लूँगा. वो बहुत ही एक्साइटेड है. जैसे मैंने कहा, माय यंगर ब्रदर जहान सबसे एक्साइटेड है, बट माय डैड वाज द मोस्ट हैप्पी व्हेन ही हर्ड दैट बिजॉय सर इज़ पार्ट ऑफ द फिल्म, क्योंकि वो बिजॉय सर को हमेशा कहते थे आफ्टर दे वर्क टुगेदर दैट नाउ व्हेन्स द नेक्स्ट मूवी हैपनिंग, एंड व्हेन ही फाउंड आउट दैट आई एम डूइंग द नेक्स्ट मूवी नाउ विद बिजॉय सर, ही वाज लाइक दिस इज इवन बेटर. सो या दे आर वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड. Lovely. एक्चुअली कहानी और फिर जब आनंद सर ने आनंद जी ने मेरे को एक जो नरेशन थोड़ा बताया कि भाई ये फिल्म है, अभी थिएटर में लोग जाते ही हैं कुछ अलग देखने के लिए, तो हमने भी हिम्मत से जुड़ा, ये डिसाइड किया कि नहीं इस फिल्म को बनाएंगे उस तरीके से. एंड ट्रेलर देखने के बाद में आप लोगों को भी एक अंदाज़ा आ गया होगा कि ये फिल्म वाकई ही बहुत ही मतलब टॉमी का तो बहुत साथ रहा ही है इसमें, बट इसमें VFX से लेके जो देखिए, सोचिए सबको मालूम है कि नकली है, लेकिन एक्टिंग देखी ना इन लोगों की, और क्या बात है अपने डायरेक्टर साहब की. तो आई थिंक थिएटर में आने के लिए जो लोग हमेशा कुछ अलग चीज़ ढूंढ रहे हैं, मुझे ऑनेस्टली मुझे लगता है हर इंसान के अंदर एक बैरोमीटर होता है, डर का, खुशी का और रोने का, हंसने का, अलग अलग. मेरा शायद डर वाला टूटा हुआ है, मेरे को पता ही नहीं चल रहा. सो मैं कई बार सोचता हूँ कि फिल्म रिलीज़ हो रही होती है फ्राइडे को और मैं थर्सडे रात को, मेरे को बहुत अच्छी नींद आ जाती है 10 साढ़े 10 बजे, और मैं जाके सो जाता हूँ. सो शायद वो एक अच्छा हो गया मेरे साथ कि मुझे डर नहीं लग रहा. और कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस में जो मुझे लगता है एक माइंडसेट ने मेरा साथ दिया है या मेरी परवरिश ने मेरा साथ दिया. मैं उस मिडिल क्लास घर से हूँ जिसको जीने के लिए बहुत थोड़ा चाहिए, बाकी सब फिल्में. Yeah, I mean, of course, it's very important to go into your personal life and try and bring those similarities to your character, and that's, I think, what we both tried to do. For me specifically, I think since I'm playing an influencer, it was all about meeting a lot of influencers, researching about their routine, how they talk, what their lingo is, how they're playing two different characters. They're different in real life, and when the camera comes on, like actors actually, they are playing a character for social media. And I think just spending time with them, scrolling through Instagram and seeing how they post, what's their lingo when they post on Instagram, what are their captions, I think all those things really helped once we were finally on set. I think what really helped me was just traveling across Mumbai to different places. नाला सोपारा जाके नाला सोपारा का स्लैंग सुनना, वहाँ पे शेक्सपियर भाई और ग्रेविटी के साथ चिल करना, फिर कुर्ला जाके नेजी भाई के साथ चिल करना, गोवंडी जाके विजय दादा, फिर धारावी में बॉयज़ के साथ 7 बंटाइज के साथ घूमा, अक्कू करके अक्कू के साथ. सो आई फील लाइक I got like a very wholesome experience of what the underground hip hop scene looks like, sounds from, and where they come from. Uske alawa, I think another thing that helped me personally is because I'm playing a rapper, I wanted to start writing my own rap. So I just started using GarageBand to make like very basic beats and started writing my own raps in Hindi, and they're very bad. और मैं कभी उसको रिलीज नहीं करूँगा, पर आई थिंक वो एक्सरसाइज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था.
to understand rhyme scheme and understand rhythm and things like that and throw and stuff, you know, क्योंकि बहुत easily आप imitate करने लग जाते हो, especially in a place जब जिसके बारे में आपको ज़्यादा knowledge नहीं है. अगर आपको Eminem पसंद है, Tupac पसंद है, you know, instinctively you want to go there. But to then find your own style is what I wanted to do. So through that, I think I discovered that. चीज़ उतनी होती है जितना आप उसको बनाना चाहते हो. You know, आप जितने डिटेल में घुसोगे आपको उतना आप उस दुनिया में खोगे और आपको और मुश्किल लगेगा. But at the same time, it's also very liberating to feel that and experience that. I think मैं inherently ऐसा बंदा हूँ जिसको स्टेज फ्राइट बहुत ज़्यादा है. हालांकि मैं बचपन से स्टेज पे चढ़ रहा हूँ, पर मुझे अभी भी बहुत मेरी अभी भी फट रही है यहाँ पे खड़े होके मेरे को विश्वास नहीं हो रहा मैं कर रहा हूँ. I'm just pretending to be calm. तो मेरे लिए टू प्ले अ परफॉर्मर हु इज वेरी एक्सट्रोवर्टेड एंड हु डज अ लॉट ऑफ क्राउड से इंटरेक्शन इज वेरी हार्ड. तो वो चैलेंजिंग था. सॉरी आपका दूसरा सवाल क्या था? यही था कि इस मूवी एक्सपीरियंस के बाद रैपर्स को लेकर कुछ अलग नजरिया आपका हो गया हो? आई थिंक वो हाँ मतलब बिल्कुल, बिकॉज आई फील लाइक आप जब भी कोई किरदार प्ले करते हो आप उस प्रोफेशन को या उस दुनिया को बेटर अंडरस्टैंड करने लगते हो ना. बिकॉज टिल देन आपकी ओपिनियन भीड़ की ओपिनियन होती है, पर जब आप खुद उसको एक्सपीरियंस करती हो यू फॉर्म योर ओन ओपिनियन अबाउट इट. तो वो तो 100%. एंड ऑनलाइन हमने आपको गाते हुए भी देखा, काफी अच्छा गा. फिल्म में भी मैंने 3 गाने गाए. वाओ. 2 रैप के और एक खुद का. सो जोरदार ताली. फिल्म तो कहानी तो आनंद सर और अभिषेक और हिमांशु मेरे पास लाए एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर. बट when I heard the script, when I read the script, what really appealed to me, apart from the fact that it was a creature feature, it has got all the thrill elements and everything, but what really appealed to me was the tone with which they had written it, keeping it as honest and real to today's generation. So I'm not part of today's generation, I'm also old, but the script allowed me to kind of delve more and try and tell a story for today's generation. And I'm hoping that we did a decent job with it, because I like to work with people who will kind of constantly keep me on my toes and challenge me in not just in my technical expertise but also in the writing of it. And Abhishek was a great support that way. And we were very clear that anywhere we feel that anything doesn't feel authentic, we should not even attempt it. In fact, I know there was one. It's okay, I can say this here, I guess. There was one very elaborate scene that we shot, we wrote, we shot, and I knew when we were shooting, I knew that this is not seeming real. Only this scene doesn't fit into the rest of the scheme of it. It is feeling inauthentic. And मैं बहुत झिझक के आनंद सर के पास गया, because वो बहुत बड़ा सीन था, बहुत खर्चा किया था हमने वो सीन शूट करने के लिए. और मैंने जाके बोला सर ये ठीक नहीं है, ये सीन ठीक नहीं है. I think I want to rewrite it, I want to do it again. And without a heartbeat, ऐसा भी नहीं कि उनको कुछ सोचना पड़ा. हाँ कर ले, तू कर ले, कोई बात नहीं. So that was the thing, and that gave me so much reassurance that that even he feels that, and he told me that if it's not feeling right for you, don't do it. And if you have to do it again, do it again. So that confidence that they gave me made me kind of made me approach the entire film like that. That we wanted to stay as true and authentic. And like Adarsh said, the preparation he did with all the people who helped him. Some of them are right here, Sath Bantai, Shantanu, and all those people, and who helped him get into that world correctly. They were the people. They were our gatekeepers to make sure that we stay as true and authentic to the world. And thank you for that. Thank you so much for all that. Thank you for your support.